أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of Power Generation course. We continue the session from load duration curve. Up till now, if you have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain you all the kind of things up till now. If you have any kind of query, if you have any kind of issue, please feel free to discuss. I will explain to you. Okay, we already discussed the load curve that is based on the 0 to 2 hours of time, that would be 900 kilowatt, and from 2 to 3 p.m. 3 a.m. of hour it would be 800 kilowatt, and from the 3 to 6 a.m. it would be 400 kilowatt, and from 6 to uh, 11 11. it would be 100 kilowatt. This is the part 1 of our question. Coming towards the load factor, the formula of load factor is average load over maximum load. Maximum load we all know, that is 900 kilowatt hour, and average load it was 179.16 kilowatt. Can anyone tell me that how can we find this value? This value, where it comes, कहाँ से आ गई ये value? सर कौन सी? This value 179.16 kilowatt hour, from where it सर comes? ये सर ये पिछले कर्व से ली थी ना हमने, पिछली स्क्रीन में जो हमारी वैल्यू आई थी, आंसर जो आया था। Yes, you are right. We found that value in average load. Average load is एवरेज। the area under the curve in maximum kilowatt hour divided by 24 hour. The ratio of both the things, we got 179.16 kilowatt. The same scenario, the value we are using in numerator divided by the maximum load, and where is maximum load? Here is maximum load, that is 100, no load 800, 900, 400, out of which this is 900. So from here we can extract it 900, divide both the things, we got 0.199, that is less than to 1, and multiply by the 100, it will be in 19.19 in percent. Up till now, if you have any kind of query, please feel free to discuss. We are discussing the assignment 2's question number 1 and part B here. Where is part A? This is the part A. This is the part A. Part A and part A, and here from part B. Now, सर विच वन इज पार्ट बी? part B start this from this page. This is page 8. ओके From सर। load factor, the part B start. Now, the reverse capacity. How we can find the reverse capacity? Reverse capacity has the formula install capacity minus maximum demand. Install capacity is, we all know, 1 mega. 1 mega means 1000 kilowatt minus maximum demand. Maximum demand we all know, that is 900 kilowatt. Subtract all both the things, we got 100 kilowatt. 100 kilowatt, that is zero point 0.1 megawatt. This is the reserve capacity. I'm sorry, I elaborate this thing in the wrong way. That was reversed capacity. This is not reverse, this is reserve. What is the meaning of reverse capacity? Can anyone tell me what is the meaning of reverse capacity? Reserve capacity.
सर द रिजर्व मीन्स जैसे आप Okay, सर आ रहा है बट yes, आ रहा है. बोलना नहीं Okay, पड़ेगा। I am giving you the scenario. If you if the third wave of corona would be coming towards to you, then what will you done at that time? अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है तो आप क्या करेंगे, और वो बहुत सीवियर हो अगर? सर एसओपीज फॉलो करेंगे सब सर। एसओपीज फॉलो करेंगे. एसओपीज के लिए जो एसओपीज के अंदर जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स हैं उनके, उसमें रूल्स एंड आप रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें मास्क का इंतजाम करेंगे और सैनिटाइजर को रिजर्व करेंगे अपने लिए. तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिजर्व करेंगे ना अपने लिए आप. यस सर, यस सर। दैट यस इज सर। द मीनिंग ऑफ रिजर्व. फूड रिजर्व करना सर लोगों द ने. रिजर्व मीन्स जैसे हम, सर एग्जांपल, गुड एग्जांपल इज जैसे हम मरी जा रहे हैं तो ऑल सारे जो थिंकिंग हमारी चीजें होती है, गर्म कपड़े वगैरह, ये जब रिजर्व करके जाते हैं सब। रिजर्व का एक मतलब ये हो सकता है, लेकिन रिजर्व का प्रॉपर मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा रखना, उसे रिजर्व कहते हैं. जी सर। ठीक है ना. जैसे बाइक में भी रिजर्व का ऑप्शन होता है ना पेट्रोल के लिए. जी सर। तो रिजर्व का मतलब यही होता है. रिजर्व कभी इस्तेमाल किया है अपने बाइक में पेट्रोल का? जी सर किए। तो कब ज़रूरत पड़ती है उसकी? हेलो। जी जी. रिजर्व पेट्रोल की कब ज़रूरत पड़ती है बाइक में? सर जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर रिजर्व पे बाइक, यानी पेट्रोल पंप तक आपकी बाइक पहुंच जाती है। मतलब वो रिजर्व होता है, इसका मतलब बाइक में एक इंस्टॉल कैपेसिटी का ऑप्शन तो होता ही है, लेकिन इंस्टॉल कैपेसिटी में एक रिजर्व कैपेसिटी भी होती है. ठीक है, जो यूटिलाइजेशन से डिफरेंट है. समझ रहे हैं? क्योंकि जब आपकी यूटिलाइजेशन से एक्सेस आपके पास है ना, तो वो सब रिजर्व में है. ठीक है. तो इसे रिजर्व कैपेसिटी समझ कहते हैं कि रिजर्व का मतलब यूटिलाइजेशन से ज़्यादा. मिसाल के तौर पे आपने एक पावर प्लांट लगाया आपके एक शहर के लिए. तो शहर की कैपेसिटी है 200 किलोवाट. तो आप प्लांट कितने का लगाएंगे? सर 300 400। 200 का क्यों नहीं लगा रहे? उसकी तो कैपेसिटी उतनी है भाई. सर कैपेसिटी उतनी है ना, मगर हम रिजर्व के लिए लगाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लोड के लिए हमें लगाना पड़ेगा। सर जैसे हम ये इसमें डिफ्यूजर के लिए जो स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो हमारे स्टेप डिफ्यूजर तो हमारा कितने वॉट पे भी चल सकता है, मगर हम फिर भी स्टेबलाइजर 500 3 नहीं 5000 3000 का लगाते हैं। जी. आप समझ तो सही गए, एग्जाम में गलत दिया आपने लेकिन. तो हम स्टेपलाइजर फ्रिज में इसलिए नहीं लगाते कि वो रिजर्व पावर उसे प्रोवाइड करता है. स्टेपलाइजर फ्रिज में लगाने का मकसद ये होता है कि वो वोल्टेज स्टेपलाइज करके देता है. कि स्टेपलाइज का मतलब बैलेंस करना, नॉमिनल रखना. सर मैं, मेरा मतलब ये है कि वो स्टेबलाइजर ज्यादा उसका होता है ना, ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ। स्टेबलाइजर लगाते तो हम उसके लिए, लोड के लिए, बट ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेबलाइजर हम ज्यादा वॉट का लगाते हैं ना। जी जी. अच्छा, जैसे आपने बताया इसमें कि हम एक स्टेट के लिए जिसकी लोकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 200 किलोवाट है, लेकिन हम उसके अंदर जो प्लांट लगाएंगे वो 300 या 400 किलोवाट का लगाएंगे. उसका रीज़न सबसे अहम ये, आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन रीज़न उसका ये है क्योंकि वक्त के साथ साथ कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन बढ़ती है. कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनका लोड बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी. तो ऑब्वियसली कुछ सालों में उनका लोड जो 200 किलोवाट है वो 250 से 300 की तरफ जल्द ही कुछ सालों में आ जाएगा. तो ऑब्वियसली आपने अगर वो प्लांट 200 का एग्जैक्ट लगा दिया, तो आप अगले कुछ साल बाद क्या करेंगे? दोबारा से प्लांट तो चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्लांट तो एक ही मरतबा लगता है उस जगह का. तो ये प्लानिंग होती है जो कि बीइंग एन इंजीनियर हमें सोचने की ज़रूरत है. और यही सेम सिनेरियो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने का भी होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे एरियाज़ में इंस्टॉल होता है. सो वहाँ पे एक एनालिसिस किया जाता है कि यहाँ का एम्पेयर ऑफ लोड या किलोवाट कितना चल रहा है. तो उस हिसाब से केवीए के मुताबिक ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाया जाता है और उससे
बढ़ाकर रेटिंग का लगाया जाता है, क्योंकि इलाके डेवलप हो रहे होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही होती है उस इलाके में, और डेवलपमेंट के नतीजे में, पॉपुलेशन बढ़ने के नतीजे में उसका लोड इंक्रीज होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बिहाफ पे हमें जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा के ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो होपफुली यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। कोई यहाँ तक सवाल किसी का है यस तो सर। पूछ लीजिए। Moving towards the next aspect, that is the plant capacity. And how can we find the plant capacity, which is average demand over install capacity. Average demand is our 179.16 kilowatt over the install capacity, that is 1 megawatt. Divide the both things, we got 0.1791 of multiply by the 100, 17.91% of plant capacity factor. Plant use factor, coming towards this thing, actual energy produced in kilowatt hour. Actual energy produced in kilowatt hour is 43,000 kilowatt hour. And from where it comes? Actual energy produced in kilowatt hour. A new SMS from 3111. Okay, we have to find from where it comes the 4,300 kilowatt hour. I think we add all these things, and we got 4,300 kilowatt hour. Are you understand till now? The 5 hours over 100 kilowatt hour, 13 hours multiplied by the 0 kilowatt hour, 1 hour multiplied by 800 kilowatt hour, and 2 hour multiplied 900 kilowatt, 3 hour multiplied 400 kilowatt. Multiplying all these things and add in last, we got the maximum utilization of power in energy. It is 4,043,000 kilowatt hour. I think it is clear now, from which it comes the energy, maximum energy utilized by the user. Is it clear now? So the actual energy produced in kilowatt hour divided by plant capacity into number of hours. 43,000 kilowatt hour. I think all of can understand from where 43,000 kilowatt hour comes. Plant capacity. Plant capacity is 1 megawatt. That is 1,000 kilowatt multiplied by number of hours. And how much hours we take these things? These are 11 hours. 11 hours the plant use factor is used, and can find. After the kind of solving, we got 0.3909, and multiply by 100, we got 39.09% of plant use factor. Now utilization factor, maximum demand is 900 kilowatt hour, install capacity is 1000 kilowatt hour. Divide both things, we got 0.9 utilization factor, multiply by 100 is 90% utilization factor. Up till now, we find all the things. Please see this thing, and if you have any query, please discuss. No sir, no query. Next start. Next slide. Okay.
If no one have any kind of query, we moving towards the next example. That this is assignment number. This is question number 2 of assignment 2, and the previous that we already discussed is question number 1 of assignment 2. Okay, the question is a generation generating station has a maximum demand of 20 megawatt, a load factor of 60%, load factor already given, the plant capacity factor of 48%, and the plant use factor is 80%. All these things are given. Find the daily energy produced, how much energy is produced on daily basis, the reserve capacity, and how much the reserve capacity of the plant means it produced the 220 megawatt, but how much the capacity is reserved in the plant, that we also has to find in part B or 2. In part 3, the number of operating hours per day, per daily, how much it work in hours on the daily basis. This is question number 3. And in part 4, the maximum energy that could be produced daily if the generating station has running all the time, that how can it produce in the daily base if all the time is produced. So moving towards part 1, find the daily energy produced, how much energy is produced on the daily basis, that is load factor, average load divided by maximum load. So we have to find the average load in part A. So we know the maximum load and load factor. Multiply both, we got 12 megawatt. This is the average load. The average load which is operating on the power plant, that is 12 megawatt. Now moving towards the average load equal to the area under the curve load kilowatt hour divided by the number of hours. The time of the daily energy utilization is 24 hours. 24 hours we have to find the energy, that how much is utilized here. So for the sake of this thing, to arrange this thing and to find the energy produced, area average load we already find here, so we have to find these things. This thing we have to find the area under the load utilization. For this thing we have to multiply this thing with this, and we got this. So the maximum average load is 12 megawatt. 12 megawatt, 12 megawatt multiply by 12, multiply, sorry, 24 hours. So 12 into 24 we got 288 megawatt hour. This is the area under the load curve energy that produced by the plant in every 24 hour is 288 megawatt hour. Up till now, anyone have any kind of query, please feel free to discuss. The daily energy produced, the part 1 is found here. Up till now, anyone have any kind of query, feel free to discuss. This is assignment 2, question number 2, and we solve its part 1. Moving towards part 2. Now, what is part 2? Find a reserve capacity. The plant or reserve capacity is installed capacity minus maximum demand. So we know the maximum demand, but we don't know the install capacity. So for this purpose, we have to move install capacity here, plant capacity here, and divide it by average demand. Average demand we already find in the part 1, that is 12 megawatt. This is 12 megawatt. 12 megawatt divided by plant capacity factor, that is 0.48. It is given in question. You can see this is 0.48. Plant capacity factor, it is 0.48. If we divide by 100, we got 0.48. Okay, average demand divided by
plant capacity factor. Divide both these two things, we got 25 megawatt. This is install capacity. Install capacity minus maximum demand. So maximum demand we got 20 megawatt and install capacity is 25 megawatt. Subtract both each other, we got 5 megawatt of reserve capacity. See, 12 megawatt. So up till now, if anyone have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain to you all the kind of things. If you have any query, please feel free to discuss. This is No the sir, no maximum query. demand. All things are clear. So moving towards the third part. What is Yes sir. part 3? Find the number of operating hours per daily. Number of operating hour means how much hour it works. So number of hours, for finding the number of hours, we have to use the formula plant use factor equal to average demand into T, divide by install capacity into number of operating hours. For this purpose, the plant use factor is 0.8, plant use factor, and it is given in, I think, question here. Plant use factor is 80, divided by 100, we got 0.8. Plant use factor 0.8. Okay, average demand is 12 megawatt, and the time we have to find daily time is 24 hours, so we mentioned 24. Install capacity, we already find install capacity is 25, and from where it find, so it find in here install capacity at this level, that is 25 in part 2. So we are using it in part 3. 12 into, sorry, 25 into number of operating hours. This is the operating hours, number of operating hours these are. So moving toward this part to there and point 8 to this, 24 into 12 into 24 divided by 25 into point 0.8, multiply and divide each other, we got 14.4 hours. So the number of operating hours on which the plant is worked is 14.4 hours. So this is the part 3. Part 1, 2 and 3 done up till now. Moving towards part 4. Find the maximum energy that could be produced daily if the generation station was running all the time. If the generating station running all the time in 24 hours, then what much of energy maximum that it could be produced from its generating power station? The maximum energy that could be produced daily is install capacity multiplied by 24. Install capacity is 25 megawatt hour, and this is the 24 hours of working, because if the generation is produced, if generating station produce the energy in 24 hours, so we mention 24 here. So 25 megawatt hour multiplied by 20, 25 megawatt multiplied by 24 hours, we got 600 megawatt hour. And 600 megawatt hour, the realistic unit is kilowatt. So 6000 can convert in these more three digits, and it would be in kilowatt hour, but realistic it would be 600 megawatt, that means 600,000 kilowatt hours. Up till now, this is the second question of assignment 2. I told to you, explained to you. Up till now, in these two questions, if you have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain to you. No sir, no query. Okay, this is the another सर example. Yes, सर ये क्लास टाइमिंग का पूछ रहा था मैं सर आपसे. जी पूछें. जी सर, क्लास टाइमिंग, क्लास ऑफ की टाइमिंग पूछ रहा था सर. बस ऑफ कर ये देते हैं, स्लाइड्स. आप बोलें ऑफ कर देते हैं अभी.
सर अगर ऑफ कर देते, क्योंकि सर फिनिश होने वाला है, मैसेज आ गया टाइम का ना, तो इस वजह से क्या फिनिश होने वाला है? स्लॉट्स जी सर। क्या फिनिश होने वाला है? सर वो डेटा का मैसेज आ गया असल में जरा। अच्छा अच्छा, चलें क्लास यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं. तो जी if सर। anyone have no kind of query till now, we have to end today's session. See you next time. Allah Hafiz. सर सर Yes, yes. सर वो आपसे ये पूछना था सर, ये जो आपने असाइनमेंट शो कराया था, जो आपका पीएचडी का असाइनमेंट जो था, जी. तो सर ये किस सब्जेक्ट के अंदर था सर, ये क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट दिया? किस सब्जेक्ट का था? इस सब्जेक्ट का नाम था क्या नाम था यार? डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में। जी. ठीक सर, ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक सेशन को हम एंड करते हैं. इफ़ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, मिस्टर मुबशिर तारिक, नुमान मकसूद, and anyone if have any kind of query, please feel free to discuss. Otherwise we end today's session. Okay, No, sir. see you next time. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.